Hello, students. Welcome to my channel, Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about Routh test for circuit stability. This topic is meant for MSc Physics and Electronics students and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The research scholars pursuing research work in electronics will find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. In Hurwitz test, to test the stability of an electronic circuit, we divide the polynomial into two parts, one for even terms and the other for odd terms, and go on dividing one by the other till the procedure terminates. The Routh test is essentially the same as the Hurwitz test, except that the long division is written in the form of an array, which is known as Routh-Hurwitz array, also known as a schedule or a scheme, which consists of the coefficients of phi function given by equation 1. So this is equation 1. We have seen this before also. We now break the polynomial QS into its even and odd parts. We thus write ms equal to a naught s to the power n plus a2 s to the power n minus 2 plus a4 s to the power n minus 4 plus so on and so forth. And ns equal to a1 s to the power n minus 1 plus a3 s to the power n minus 3 plus a5 s to the power n minus 5 and so on and so forth. We assume that ms is of higher degree than ns. The coefficients of ms occupy the first row of the array and those of the ns occupy the second row as shown below. The first row consists of the coefficients of all powers of s of the polynomial ms, and the second row contains all the coefficients of s in the polynomial ns. We now complete the Routh-Hurwitz array of numbers. For n equal to 6, this is an array of n plus 1 rows, the first two of which are given by equation 4. So this is our equation 4. First row, the coefficients are a0, a2, a4, a6, a8. So this is written here in the first row. In the second row, the coefficients are a1, a3, a5, a7, a9, and so on. The third row, the coefficients are b1, b3, b5. In the fourth one, c1, c3, and then d1, d3, e1, f1. How these are calculated, we will shortly come to this point. Okay, so the first two rows are simply given by the coefficients of ms and ns. How to calculate these coefficients, we are coming to it shortly. Okay, we now see how the remaining entries B, C, D, E, F are determined by the procedure illustrated in figure 1. Okay, let us now see first how an element in the row K and column J is calculated. This is done from 4 other elements that are present in the two preceding rows, row K minus 1 and row K minus 2. Moreover, they are in the column 1 of the array and the column immediately to the right of the element to be calculated, that is column j plus 1. These 4 elements can now be treated as the elements of a determinant as shown here. Okay, देखिए हमें b1 का मान निकालना है and b1 appears in third row and first column. ठीक है, तो b1 का मान निकालने के लिए we will consider two rows just preceding the row in which b1 appears. b1 appear हो रहा है थर्ड रो में, तो हम किस रो की बात करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो.
किस कॉलम की बात करेंगे? फर्स्ट कॉलम जिसमें B1 है, और B1 जिस कॉलम में है उसके अगले कॉलम में, मतलब सेकंड कॉलम। क्लियर? अब देखिए यहाँ, इसके लिए हम बात करेंगे B1 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड रो का। तो ये हमारा फर्स्ट रो में एलिमेंट था, ये हमारा सेकंड रो में एलिमेंट है। ये फर्स्ट कॉलम में है और ये हमारा सेकंड कॉलम में है। ठीक है? अब देखिए A1 A2 को ज्वाइन कीजिए, एरो दीजिए विथ ए पॉजिटिव स्लोप। A0 A3 को ज्वाइन कीजिए, स्लोप दीजिए ऊपर की ओर, दिस स्लोप इज नेगेटिव नाउ। तो जिसका स्लोप पॉजिटिव है उसको लिखते हैं पॉजिटिव ग्रुप में। ठीक है? जिसका स्लोप नेगेटिव है उसको लिखते हैं नेगेटिव ग्रुप में। ओके? डिवाइड किसे करते हैं? B1 के ठीक ऊपर जो एलिमेंट है उससे। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू फॉर B1। सिमिलरली फॉर B3 अपीयर्स इन द थर्ड रो। तो बात करेंगे हम किसकी? बात करेंगे हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो की। B3 अपीयर हो रहा है थर्ड रो सेकेंड कॉलम। हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक है? B3 अपीयर हो रहा है सेकेंड कॉलम में, हम बात करेंगे किसकी? थर्ड कॉलम की। ठीक है ना? थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। इन दोनों को मिलाते हैं, स्लोप इज पॉजिटिव। इन दोनों को मिलाते हैं, स्लोप इज नेगेटिव। जिसका स्लोप पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जिसका स्लोप नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। इसे डिवाइड करते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम में, उसमें। दिस इज A1 हियर, A1 से डिवाइड किया। ओके? सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड till all the n+1 rows are formed. This is what we have done, is written here. Okay? The Routh-Hurwitz stability criteria states that a network or system described by a network function for which the denominator polynomial is QS is stable if and only if there is no change in the sign of the elements in the first column of the Routh-Hurwitz array. This requirement is both necessary and sufficient for stability. So this is all about the Routh criteria for circuit stability. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.